Hello friends, I am Aditya and you are watching Germanclass. In this class we learn vocabulary with the help of this article. This is online news and we'll read this news and we'll underline and we learn difficult words in German. This is very good practice. You can find some more videos based on this in the playlist newspaper reading, learn German with newspaper reading. So there are so many other videos available and below you will find the link of vocab classes. If you missed previous vocab classes, please go and watch the link given below. तो बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है vocab के ऊपर, नीचे लिंक है उसको जाके देख लेना। और आज हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल है, ऑनलाइन न्यूज़ से कुछ नए वर्ड सीखेंगे। So let's begin with this news. Dating platform sorgt für Anstieg der Wirtschaftskriminalität. डेटिंग प्लेटफॉर्म बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, वहाँ आपको बताया जाता है कि यू कैन डेट विद अ बॉय और अ गर्ल, यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट, और उसके बाद आपको किसी बॉय या गर्ल वर्चुअली आपको लगता है कि आप किसी बॉय या गर्ल से बात कर रहे हो, आपकी फ्रेंडशिप हो गई है, ओके। तो डेटिंग प्लेटफॉर्म होते हैं बहुत सारे, आपको चीट किया जाता है एक्चुअली, इट इज़ अ वे ऑफ चीटिंग द पीपल। दे आस्क यू फॉर द मनी, यू पेड द फीस, you paid the charges, whatever, 2,000, 3,000, 5,000, and you start talking virtually online with the boy or a girl, whatever you want, and you think that actually you are talking with the boy. No, but that's the employee of these cheating companies, these cheaters. Employer is sitting on another side and you think that okay, it's a girl is dating me, I am dating the girl, or a boy, oh I have a friendship thanks to this company, thanks to this platform, such a nice, such a wonderful. But at the end of the day, after just a couple of days, you realized that you have been cheated. आपके साथ धोखा हुआ है, चीट हुआ है। कोई बॉय कोई गर्ल नहीं है, एम्प्लॉयज़ हैं इस कंपनी के जो आपको चीट करते हैं, जो दूसरी साइड पे बैठ के आपसे ऑनलाइन बात कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई लड़की या लड़का आपसे बात कर रहा है। तो वही लिखा है यहाँ पे, डेटिंग प्लेटफॉर्म sorgt für Anstieg. डेटिंग प्लेटफॉर्म worry for increasing of economic criminality. Economic criminality means they ask you for the money and you paid the fees. So it's a type of criminal activity. It's a criminal activity. They cheat you. They tell lie. Okay, we'll provide you a girl to date. You can will help you in doing friendship. और आप फंस जाते हो। ऐसा कुछ नहीं होता। Please beware. You have to be very careful. There is no such application. Okay, these applications are fake, fraud. तो you have to be very careful. बचना है आपको, ऐसा कुछ नहीं। ऑनलाइन कोई फीस पे नहीं करनी। डोंट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सच पीपल, ओके, दे आर गोइंग टू चीट यू। ठीक है, आपका बैलेंस, बैंक बैलेंस पूरा जीरो कर देंगे। ठीक है, तो यही लिखा है, डेटिंग प्लेटफॉर्म sorgt für Anstieg मीन्स इंक्रीज ऑफ इकोनॉमिक क्रिमिनल एक्टिविटीज। Anstieg, दिस वर्ड वी हैव लर्नड ऑलरेडी। Anstieg मीन्स टू इंक्रीज। नाउ देयर Anstieg, इंक्रीजिंग criminal activity, economic criminal activity. Economic means in terms of monetary amount, you pay the fees and you get the service, but this is not the actual service, this is the fake fraud. We'll see this news. आगे इस न्यूज़ को पढ़ते हैं डिटेल में, क्या है इसमें, चलिए। I hope it is visible. Die Wirtschaftskriminalität ist im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2021 gestiegen. The economic criminal activity, such kind of activities, has been increased in compared to 2021. Im vergangenen Jahr, in the as compared to previous year. इस साल इस तरह की criminal activities बढ़ गई हैं। Gestiegen, okay, gestiegen means increased. These activities has been increased from 51,260 to 73,114 failure cases. तो पहले केसेस 51,000 अराउंड थे, नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड अप टू 73,000। देखो कैसे लिखते हैं, फॉन आउफ, द केसेस हैज़ बीन इंक्रीज्ड फॉन आउफ फ्रॉम टू, आई राइट हियर, ओके। केसेस इंक्रीज हो गया तो कैसे लिखेंगे, दिस इज केस, हाँ, केस इंक्रीज हो गया, फॉन 50,000 टू आउफ, ओके, केस, एंड वी से फाल, plural failure cases increased from this number to this number। तो वही बोला है, क्रिमिनल एक्टिविटीज के केसेस im vergangenen Jahr, gestiegen मीन्स इंक्रीज्ड, बढ़ गए हैं,
Perfect, increased. This we have done already in the vocab class. So please watch the link given below. So बढ़ गए हैं 50,000, 51,000 से around 73,000. Okay, next. Das liegt insbesondere an einer Kostenpflichtigen. Kostenpflichtigen means where you pay a certain amount. Okay, Kosten. It's a price-based application. You have to pay the fees, you have to pay the charges, and then you have been told that you will get the service. So you have to pay the fee. So that's why Kostenpflichtigen. Das liegt. It is lying especially in a charge fees-based betrügerischen dating platform. Cheated dating platform. It's a platform, dating platform. They're going to cheat you, betrüger, cheat you, and they ask you for the money. Kostenpflichtigen. It's a cost-based, price-based application. You have to pay the fees, only then you can access the application further. And after that you realize that you have been cheated. आपके साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, क्योंकि आपने फीस पे करी है. Kostenpflichtigen. It is bound. Okay, you have to pay the fees. You have to pay certain charges, certain amount. Okay. Die Nutzer und Nutzerinnen, Users. Nutzer, Nutzerinnen, Users dachten means thought. Users thought, sie schreiben mit anderen Leuten, die auch Interesse an ihnen haben. Users को लगता है कि वो किसी दूसरे पर्सन से बात कर रहे हैं जिसको वो चाहते हैं, whom they like, गर्ल और ए बॉय. ऐसा लगता है यूज़र को. सपोज आप यूज़र हो, आपने डेटिंग ऐप पे ऐप इंस्टॉल किया, आपने फीस पे कर दी और आपकी बात स्टार्ट हो गई. यू स्टार्ट टॉकिंग टू द पर्सन ऑन अदर साइड mit anderen Leuten and you think sie dachten you are a user, nutzer, that actually there is a person sitting on other side, but no, it's an employee of this date application. They are cheating you, they are doing fraud. Okay, so there is no such person, there is no such boy or a girl. So what is the word here? Dachten means to thought. Dachten, you thought, think, thought. Denken, present verb is denken and dachten. Okay, sie schreiben mit anderen, you are writing with others. Die, relative, die means who have this also interest in you. Interesse haben an ihnen. So vocab Interesse haben, to have interest in you. Interesse haben plus an, dative. Okay, so sie haben Interesse, okay, an ihnen. You think that the girls and the boys have interest in you, they are interested in you, they wanted to talk to you. You thought, sie dachten, but that is not the case. In Wahrheit. Wahrheit means in reality. In Wahrheit. Wahrheit means in reality. In reality, chatteten sie mit Angestellter Firma. You can see the bold letter. In reality, you are chatting with actually the Angestellte, the employee of the company. Dating app के जो employees आप उनसे बात कर रहे हो actual में. There is no friend over there. There is no, it's not actual friend that you think कि आप किसी boy और girl से बात कर रहे हो. You start having friendship. No. In Wahrheit. Wahrheit means reality. Reality. In reality. Okay. Die Wahrheit. Die Wahrheit. सच में, हाँ, सच में क्या है कि आप एम्प्लॉय से बात कर रहे हो. इन रियलिटी. इन शेल्स्विक हॉल्स्टाइन, ठीक है, शेल्स्विक हॉल्स्टाइन स्टेट है जर्मनी में. कॉन्टे ein Verfahren mit mehr als 33.000 Fällen polizeilich abgeschlossen werden. शेल्स्विक हॉल्स्टाइन इज अ प्लेस इन जर्मनी. वहाँ पे पुलिस ने एक केस क्लोज किया है. ओके, जिसमें केसेस अराउंड मोर देन 33,000 केसेस, ठीक है, थे उसमें इन्वॉल्व इस तरह के डेटिंग फ्रॉड में. सो पुलिस हैज़ क्लोज्ड सच काइंड ऑफ केसेस. इस तरह के केसेस पकड़े गए हैं, ठीक है, अराउंड 30,700 केसेस. इट्स अ बिग फ्रॉड. बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा था, बहुत बड़े लेवल पे फ्रॉड चल रहा था शेल्स्विक होल्स्टाइन में. इसी तरह का यहाँ पे लोगों से चीट किया जा रहा था, फ्रॉड किया जा रहा था. ओके, दे आर बीइंग आस्क्ड मनी. ओके, एंड देन they thought that okay, they have paid the fees, so they will get a person to talk, boy or a girl.
dating platform, dating application, you have to be very careful. It's actually fraud. तो वही यहाँ पे लिखा है, फ्रॉड किया जा रहा है लोगों के साथ. ओके, दे आर बीइंग चीटेड. तो यहाँ पे वोकैबुलरी देखिए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स एक बार मैं मार्क कर देता हूँ दोबारा से. Nutzerinnen, users. Dachten, thought. Interesse haben means to have interest. Wahrheit, truth. Chatten, to chat. English word chatten, तो past chatteten, preteritum. Angestellten, employee of company, firma. Failure, cases like corona cases. ओके, इस तरह के फेलर केस, कोई भी केस हो सकता है, क्रिमिनल केस, कोरोना केस, emergency case. Fall is the word. Verfahren, proceedings. Abgeschlossen, closed. Perfect है, passive voice है, passive है. इस तरह केसेस क्लोज किए पुलिस ने. Kostenpflichtung, cost based, price based. Betrügerischen, cheated, in a cheated manner. Gestiegen, increased. Vergangenen, in the previous year. Vergleich, im Vergleich zu, in comparison to. So we have done these words. So I hope you have learnt some new words. So please, if you don't understand, watch this video again and also go to the playlist of Learn German with Newspaper. You will find some more interesting videos like this. अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलते एक नई क्लास में. बाय बाय, टेक केयर.